So first of all, would like to share that what is order of reaction. Last time we studied that what is order of reaction, and today we discuss the very first, that is called zero order reaction. The notes will be available soon after the class in your Google file, Google Classroom, and this is the zero order reaction we are studying. First, hope my voice is clear and audible to all of you. Yes, of course. Now, very first we discuss what is zero order reaction, okay, and then proceed further. So basically when we discuss about zero order reaction, and here it is the first zero order reaction. Screen is visible to everyone, and is this readable form, in readable form? So all you that what is zero order reaction? The first question is, so zero order reaction is a reaction in which the rate of the reaction, that is rate, is equal to rate constant K, and by the mean of reactant R to 0. If you have a reaction or a reactant and that results in formation of product, then according to rate law, a reaction is said to be zero order when the concentration of the reactant is raised par to 0. It is said to be zero order reaction. We know that for rate, what we apply here, that is rate of reactant, it shows decrease minus sign, dr, change in we can say concentration of reactant, upon dt. This is called rate in differential form, and this is equal to k r की power 0. This is a integration rate expression. अब हम अभी जो equation यहाँ पे की है, this is differential equation. If we arrange the equation, we know that anything raised power 0 is equal to 1. Therefore, we can write it is dr upon dt is equal to k, and anything raised power 0 is equal to 1. So it becomes k into 1. When we rearrange equation, it becomes dr is equal to minus k into dt. What I do here, I just multiply dt by k and take the sign, negative sign, towards the right side. So equation becomes dr is equal to k dt. So again, you just remember here that rate law states that the order of reaction is said to be 0 when the concentration of the reactant is raised par to 0. Anything raised par to 0 is equal to 1. So we are putting here 1. And this equation is called differential equation. This equation is called differential equation. So all these equations which are later with dt or dr by dt are called differential equations for zero order reaction. Now we have to calculate integrated rate expression. So we put this equation as 1, and now we integrate equation 1. So on integrating equation 1, what we get? We get r is equal to minus integration of dt becomes kt, kdt become kt because k is constant here, and dt की इंटीग्रेशन जो यहाँ पे t होगा, और एक लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट i जिसको बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये बन गया हमारे पास यहाँ पे. And this, let's say this is equation number 2. So what we get from integrating, we get r is equal to minus kt plus I. If we now we put a case 1. According to case 1, if we take time t is equal to 0, that means when the reaction will is just at the start or is not started, it before the reaction, when time is taken as 0, at that point the concentration of the reactant is equal to, let me put that R naught, and R naught here means concentration reactant at time 0. This means R naught is called initial concentration.
तो भी जब टाइम 0 लिया तो ये जो है हमारे पास इस टाइम t पे था और ये क्या पुट किया मैंने 0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन. Therefore equation 2 becomes, what equation 2 becomes, r become r naught minus k is k, and we put time 0 and plus I is I in place of, we can see equation 2, and we get what? We get I integration constant, and that is equal to r naught. Other thing that it becomes 0, so therefore I is equal to r naught. Now we get the value of the I from here, and let me put this as 3, equation 3. Putting the value of I in equation 2, what do we get? We get R is equal to minus KT plus I की वैल्यू डालते हैं, I की वैल्यू आएगी R naught. ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं R को एक साइड, ये बनेगा आपका R माइनस, ये प्लस इस तरफ से आएगा, माइनस यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस के टी, यहाँ पे माइनस साइन, इसको भी माइनस बना देते कॉमन करके, ये बनेगा आपका आर नॉट और आर इज इक्वल टू के टी. अगर हम इसको माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल करें, देयरफॉर फ्रॉम हियर के विच इज कॉल्ड we can say rate constant for zero order reaction, and k becomes r naught minus r by t. This is nothing but equation called integrated rate expression for zero order reaction. So this is the required equation. Clear? तो ये भी मैथमेटिकल स्टेप हमारे पास है. तो अगर कोई पूछे डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप इसकी फॉर्म में दे सकते हो, कोई पूछे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तो आपके पास ये फॉर्म आ सकती है यहाँ पे. So we have difference of initial minus we can say concentration at time t upon the total time that is required for completion of reaction, that is called t. Okay, this is the, we can say, right approach here to find. Okay, then next, अगर यहाँ पे कोई पूछे कि भाई आपका is equal to KT minus R naught, या फिर आप R इज इक्वल सकते हो R naught minus KT हो सकता है, यहाँ पे ये भी निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो, यहाँ से R naught निकाल सकते हो, तो दोनों चीज को निकाल सकते हो. ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी, हमारे पास, लेट आई एम राइटिंग इट एज 4, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर zero order reaction. Now what is basically zero order reaction? So zero order reaction means when the concentration of each term that is taking part in chemical reaction is raised par to 0. Examples of zero order. So very first example I told you in earlier classes, that if a reaction proceed via catalyst and the reaction is, by the way, decomposition. For example, decomposition of ammonia is on the surface of metal like platinum, and it is thermally decomposed. It results in formation of nitrogen plus hydrogen, just a reverse of Haber process. This is a zero order reaction. Okay, so when we try to change the concentration of the ammonia, the rate will remain constant. That's why we can say it is a zero order reaction. Okay, so in any condition, if we change the reaction condition, we are not able to alter the concentration of the ammonia. Okay, that means the reaction is independent of concentration. That's why it is said to be zero reaction. Number second, I am going here to say decomposition of hydrogen iodide, okay, over surface of gold to give hydrogen plus iodine. This is also a zero order reaction. And all those reactions which are controlled by enzymes as well as catalysts, as we can say metals, are said to be zero order. Third, I specify in the last lecture that all those reactions which are accompanied by photochemical synthesis, like we say when H2 combine with I2 in presence of sunlight, this becomes photochemical reaction and it is called photochemical synthesis. It results in formation of twice of HCl. So formation of we can say
HCl from H2, that is basically again a zero order reaction. Okay. Now next is, after example, if we try to show the unit from the equation, we know that the rate is equal to K constant and it is reactant raised power 0. We know that rate is what? Concentration changing constant upon time, and this is K, and this is also concentration raised power 0. Therefore, K left is here only concentration upon time. And by the way, you know that concentration is moles per liter and time is per second. So unit is moles per liter per second. Also discussed last time, the unit of the zero order reaction is equal to moles per liter per second. So this is what we can say zero order reaction. Now, how to deduce graph? Basically, there are three aspects to be asked. One is they are saying what is reaction, what is rate of integrated rate of expression, and thirdly they will ask graph. So we will try to draw graph from the equation. So I am drawing the graph from the equation. I am using this equation for graph. ठीक है, अब इसको हम कैसे ग्राफ में यूज करेंगे? So I am drawing a graph, very simple graph. So if we just take two, we can say particulars. One, we are taking R, that R is said to be concentration of the reactant. This is R versus I am taking time T. Okay, this negative sign here shows that this is called slope. Okay, and this is the intercept. If you remember equation of graph that says y is equal to mx plus c, okay, where m is said to be slope and c is said to be intercept. So I am using the same equation, but there is negative sign. So we have this graph for positive sign, and I hope that non-medical students know very well this equation as graph equation. And for this graph equation, what we do, we just plot y-axis here and axis here. So it becomes y x-axis. If it is positive sign, it will increase from the base, and this will be the slope, and slope is equal to here m. And this is point of, we can say, intercept, that या यहाँ पे बता सकते हैं intercept जहाँ पे कट कर रहा है, intercept यहाँ पे होगा c. बट इस ग्राफ में क्या है, कभी हमारे पास ये होगा यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी यहाँ से, रिएक्टेंट की पहले ज्यादा फिर डिक्रीज करेगी, और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये काट रहा है इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, एंड this point become r naught, and this slope that is equal to, this slope is equal to minus k, or you can say k is equal to minus slope. This is the graph for what we can say zero order reaction. So finally we deduce graph from the equation, and we will deduce the equation for integrated rate expression. Now next they will ask that what is half-life period. First of all, what is half-life period? So basically half-life period means time required to complete half of the reaction. So what is half-life period? That simply means it is noted by HLP, and it stands for half-life period. So we are going for first zero order reaction. So half-life period means time required for completion of the half of the reaction. That means to consume half of the reactant or to form half of the product. It is noted by, if T is the time, is noted by T1 by 2 or T 0.5 लिख सकते हो. जैसे भी स्पेसिफाई करना आपने हाफ कर देना है. तो जब टाइम हाफ हो गया तो इस टाइम T पे रिएक्टेंट क्या थे R, और जब टाइम हाफ होगा तो उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन जो R0 थी उसका हाफ होगा. सो रिमेंबर, जब हमारे पास टाइम T था उस समय रिएक्टेंट की कंपोजिशन क्या थी भाई, R, और जब आपने टाइम को हाफ किया तो उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस्ड टू
half, or we can say half of the products are formed and half of the reactants are consumed. So now we are putting equation zero order. We know for zero order, what is K? K is equal to R naught minus R upon T. And when we put T is equal to 1 by 2, it becomes, therefore equation becomes T 1 by 2, that is half life period. T become R naught की जगह पे R naught T आएगा, माइनस होगा भाई what is R, R become here R naught by 2 अपॉन, अब मैं T को K की जगह पे ले रहा हूँ, K को T, तो ये बनेगा भाई हमारे पास, इनको फर्दर सॉल्व करो, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ R naught minus R naught upon twice of K, and that become R naught upon twice of K, and that is your half life period for zero order reaction. So this is required equation. So from here it is clear that for zero order reaction, half life period for zero order reaction is proportional to initial concentration. So this is the one point you can define here, that if you are dealing with the half life period of the zero order reaction, then the half life time is proportional to initial concentration. तो कोई पूछे आपको भाई वो कौन सा रेट है, कौन सा हाफ लाइफ पीरियड है जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल होता है, वो होता है कौन सा जीरो ऑर्डर में. So this is the one of the point, one of the characteristics to define, to identify half life period for the zero order. Now if we just draw a graph, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहां से कहीं से भी ला सकते हो ग्राफ को आप. You can put graph from anywhere. Suppose I am putting a graph for this equation, T 1 by 2 is equal to R naught or 2K. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी देखो सिंपल है, हमारे पास हमने क्या लेना है, एक तरफ लिया हमने हाफ टाइम T 1 by 2 लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ लिया हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R naught. तो बताओ अभी ग्राफ क्या आएगा, 1 by 2 पॉजिटिव साइन है, यहां से शुरू करते हैं, ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, बढ़ेगा, और क्या भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 by 2, तो स्लोप कितना आएगा भाई, स्लोप हमारे पास आएगा यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू 1 by 2K. So this is the graph for first zero order reaction. So from here we clarify that this is the zero order reaction. We have done integrated expression, we have done examples, graphs and unit. These are the questions which are being asked from the zero order reaction. Any questions from here? Any questions? So I will send the we can say this equation to you, all of you, just after the class. But I think the steps are not simple, and for non-medical, medical, so they must understand it carefully from the NCERT. The rest is from a non-medical section, they can do it very well. So now next I'm going to discuss the one more, that is for first order reaction. Now if you are latecomer here, you can just understand the first order, what is first order, and you can also compare the first order and second zero order, so that you can even go for zero order reaction calculation purpose. So अब मैं जा रहा हूँ भाई कहाँ पे, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में, तो जिसने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया उसके लिए आप देखो, तो आप अगर फर्स्ट ऑर्डर को समझते हो जीरो भी निकल जाएगा. So surely I am going for the first order reaction. So now we know that a reaction is said to be first order when rate is equal to rate constant for first order and concentration R raised by 1. If you have a reactant R, it gives what? It gives product P, or product पूरा लिख देते हैं. So a reaction is said to be first order when the concentration of the reactant is raised by to 1 or unity, it is said to be first order. So what we do, we convert rate. So we know that rate is change of reactant dr upon dt. लिखा वहां पे जीरो में भी ये लिखा था, यहाँ पे क्या होगा भाई k, वहां पे r की पावर 0 थी, यहाँ पे r की पावर 1, तो r की पावर 0 वहां पे 1 था, यहाँ पे r की पावर 1 मतलब एनीथिंग रेज पावर 1 इज सेम वैल्यू. सो वी रिरेंज, इसको थोड़ा मैं रिरेंज करूंगा, ये बनेगा dr अपॉन r, मैंने r को एक तरफ लिया,
और माइनस साइन तरफ लेके क्या बना भाई, ये बना के डी टी, ठीक है। वहां पे खाली आपका आप देख सकते हो वहां पे क्या रह जाएगा, अगर वहां पे जीरो बनेगा तो वो टर्म रहेगी नहीं वहां पे। अब ये हमारे पास इक्वेशन है भाई, दिस इज इक्वेशन एंड कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, अगर मैं बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किसकी जीरो की है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसमें क्या आता है, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और आर की पावर जीरो, या बोल सकते हो वहां पे क्या आता है, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, बट यहाँ पे क्या आता है, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। नाउ this equation become differential. We integrate equation number 1 to get integrated rate expression. So what we have, integration of dr upon r become log of natural r, okay, and minus k is constant, dt की बनेगी t, प्लस हमारे पास आएगा i, integration constant, okay. Now again this is the equation number 2. So here we put case, वहां पे भी सेम क्या था, केस क्या लिखा हमें, t इज इक्वल टू 0, जब t 0 होगा तो r जो है वो बिकम r नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे 0 है वो नॉट स्पेसिफाई कर रहा है। तो बताओ इक्वेशन 2 क्या होगी, इक्वेशन 2 बिकम r log ऑफ नेचुरल r नॉट इज इक्वल टू माइनस के, t की जगह पे 0 वैल्यू और i, मतलब यहाँ से i निकला log ऑफ नेचुरल r नॉट। सो ये निकला भाई हमारे पास इक्वेशन 3। Put the value of 3 in equation 2. What we get? Log of r is equal to minus kt plus log of natural r naught. यहां से निकालते भी फर्दर इसको करके, यहाँ पे आएगा kt is equal to log of r naught minus log of r. You know that log a minus log b is equal to log a by b. So it become log of natural r naught upon r. And you know that log of natural is equal to 2.303 log base 10 r naught upon r. ये आपकी इक्वेशन बन सकती है, और यहीं पे आप चेंज कर सकते हो इसको एक्सपोनेंशियल में भी, बट हम एक्सपोनेंशियल में चेंज नहीं करेंगे। तो अब तो अभी k क्या होगा, तो k बिकम 2.303 अपॉन t log r naught माइनस r। अगर आप कंपेयर करो 0 के साथ तो वहां पे क्या था भाई, वहां पे k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन t, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2.303 t log r नॉट अपॉन r। r नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल, दैट इज एट टाइम t। तो आपको पता है कि यहाँ पे रेशो किसका है, इनिशियल और उस टाइम का जब हमारे पास टाइम t है, और इनिशियल जब टाइम 0 था। दिस इक्वेशन इज सेड टू बी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। निकला भाई यहां से। अब मुझे यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है, तो आई एम चूजिंग अगेन दिस इक्वेशन फॉर ग्राफ। सो ये आपका y, ये आपका mx, और ये आपका इंटरसेप्ट। तो बताओ भाई क्या होगा, मैंने क्या किया, y एक्सिस पे लिया log ऑफ r, अच्छा भाई टाइम लिया है ना, होता ना यहाँ पे mx, तो टाइम लिया t। ये भी यहाँ पे भी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहां से दिखा दो डिक्रीज हो रहा है, तो ये बनेगा आपका स्लोप, इस तरह से बनेगा यहाँ पे भी स्लोप, और ये आएगा आपका k, एंड k इज माइनस स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू माइनस k। फिलहाल इसके लिए कर रहा हूं यहाँ पे, ये बनेगा आपका log ऑफ r नॉट। दिस इज द केस, एंड व्हेन यू डिस्कस द सेम फॉर दिस इक्वेशन, तो क्या बनेगा भाई ग्राफ यहाँ पे, जब इस इक्वेशन के आप ग्राफ यहाँ पे प्रोड्यूस करें तो व्हाट विल बी ग्राफ, द ग्राफ विल बी, अब ये देखो भाई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे log ऑफ r जो r नॉट है, एक तरफ उसको लिया हमने, ये पुटिंग log ऑफ r नॉट अपॉन r वर्सेस क्या करेंगे टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने लिया यहाँ पे, तो क्या होगा भाई ग्राफ आपका स्लॉटिंग होगा, पॉजिटिव साइन, और ये बनेगा आपका भाई स्लोप, और स्लोप क्या निकलेगा, दैट इज k अपॉन 2.303. So this is the graph of log r naught r by t. So we have to draw graph from equation. You can put any equation, but which is meaningful. You cannot put any equation which is not meaningful. So put that equation which is meaningful. Now we calculate half life period. अच्छा भाई यूनिट तो आपको पता है यहाँ पे
सो यूनिट क्या होता है भाई, तो आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट दैट इज इक्वल टू सेकेंड माइनस 1. दिस इज यूनिट. नाउ वी कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड. Again, time required to complete half of the reaction. So if we assume time as t1 by 2, we know that at time t we have concentration R, and when it is reduced to half, that means R naught by 2 हो जाएगी ये. So we are replacing the equation 1, that is equation required, equation 4th. So it becomes t half is equal to 2.303 अपॉन के. टी को यहाँ पे डिस्प्लेस किया और टी को मैंने रिप्लेस किया किससे भाई, टी 1/2 से. के यहाँ पे आ गया. आगे का देखो भाई, आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा हमारा स्लॉग आर नॉट, तो आर नॉट ही है, और नीचे जो आर है वो बिकम हो गया आर नॉट बाई 2. तो इसलिए तो हमें आर नॉट बाई 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई आर नॉट कैंसिल, ये बनेगा भाई 2.303 अपॉन के, और लॉग आएगा 2. तो हम log 2 की वैल्यू लगाएं 0.310 और उसको मल्टीप्लाई करें किससे भाई, 2.303 आएगा आपका 0.693 अपॉन के. ये हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड. तो देखो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो ऑर्डर में मैंने कहा था कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर. बट रिमेंबर फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है पीरियड है, that is dependent of concentration, that is initial concentration. So here it is dependent on we can say inversely dependent on K, rate constant. So it is nothing but ratio of a value that is 0.69 to the rate constant, that is K. And this is what we can say our first order reaction. Now examples of the first order reaction. So we specify examples of the first order reaction. So I am now specifying the examples of the first order reaction. So remember, if any reaction, the very first is all the radioactive substances which undergo radioactive reaction, they are first order reaction, the very first. So remember, if any reaction that is radioactive reaction, that is first order reaction. So if you have an example, you can, if you have any radioactive example, you can put that, but I am putting here one Ra, that is called radon. Its atomic number is 88 and mass number is 226. When it is bombarded, it is being radioactivated. It gives us this is radium. It gives radon 86 plus helium 2. So 86 plus 2 is 88. और इसका नंबर आपको पता है 4 होता है, इसमें से 4 निकाली बनेगा आपका 222 plus 4 is equal to 226. So this is the first order reaction. So any example of, we can say radioactive example is our first order reaction. Number second is any reaction which consists of water. Means अगर उसमें रिएक्टेंट दूसरा क्या वाटर है तो वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगी. जिस एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपने हाइड्रोलिसिस किया किसका भी, एस्टर का, RCOR एस्टर. जब एस्टर को रिएक्ट करोगे वाटर के साथ, वो देगा भाई आपको पता है एस्टर देता है प्लस अल्कोहल. तो यहाँ पे जो रेट होगा that is proportional to concentration of ester only. Water is in excess, और एक्सेस में जो आपका मैं पढ़ा लास्ट टाइम बताया था, जब एक्सेस में तो उसको चेंज नहीं करते कंसंट्रेशन में. तो जब कोई भी अमाउंट एक्सेस में हमारे पास हो तो उसका बेसिकली वहां पे कांस्टेंट 0 होता है. सो ऑर्डर रिस्पेक्ट टू वाटर इज हियर इक्वल टू 0, hence it is only dependent upon ester, and here water is in excess. So if we have excess amount, we reduce that VD to 0. So this is an example. Like you have sucrose, C12H22O11. Again, I am treating with water. This uses glucose plus fructose with same formula C6H12O6. Here again, water is in excess. That means the rate is equal to or proportional to
only concentration of C12H22O11 raised by 1. So this is called again a zero order reaction. Note that here it is very important to mention, अगर यहाँ पे देखें तो इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी गई, एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, सो मॉलिक्यूलिटी बिकम 2, और यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी कितनी है 2. तो दिख रहा है कि मॉलिक्यूलिटी 2 है, तो एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, बट ऑर्डर यहाँ पे एक्चुअल में कितना होता है, 1 होता है. तो अगर ऐसी रिएक्शन जहां पे it is expected, it looks like the order is being 2 but it is first order, they are said to be pseudo order reaction. तो एग्जांपल कौन सी भाई यहाँ पे, ये एग्जांपल है किसकी, pseudo first order reaction की. What is pseudo first order reaction? एक ऐसी रिएक्शन जहां पे it appears that order is 2 but actually due to presence of one excess of agent like water here, water here, and the rate of the water respect to, or we can say order of the water respect to H2O is become 0, and hence it is only the acetyl in first example and it is only sucrose in second example, due to which the order is equal to 1. So remember, if any reaction appears to be of higher order but actually that is not so, it is because of the excess of the one of the reactant, and here it is said to be pseudo first order. So कोई पूछा आपको pseudo first order example, तो आपके पास ये पड़ी है. कोई पूछा आपको first order example, तो ये example हमारे पास है. तो हमें यहाँ पे बेसिकली बात से करनी, ऑर्डर से करनी है. तो ये भी हमारे पास ऑर्डर क्रिएशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो नाउ एक और एग्जांपल देता हूँ भैया आपको मैं. रिमेंबर वन मोर एग्जांपल, थर्ड. अगर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता वो क्या देता है, वो देता है हमारे पास वाटर प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, मॉलिक्यूलिटी यहाँ पे 2 टाइम्स है बट ऑर्डर हमारे पास 1 है. सो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बिकम आल्सो फर्स्ट ऑर्डर. फोर्थ, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 to give us nitrogen dioxide plus oxygen. This is also first order. And last one, decomposition of sulfur chloride SO2Cl2 to give sulfur dioxide plus chlorine is also first order reaction. So you simply remember these 3 examples are also there, and these are all first order reaction. Okay, and if any question from this section, you can put that question, and next time we deal with the numericals of the same question. Okay, we deal with the numericals of first and zero order reaction. So remember, you have to remember 4 things here. एक तो रेट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, और साथ में इनके ग्राफ्स क्या हैं, और यूनिट तो आपको पहले बता दिए हैं. तो देयर आर 5 थिंग्स टू रिमेंबर and with the examples. So mention example from NCERT or other book, but do not mix the examples, do not mix the equations, and practice equation more. That's all. Any question, any, let me know by either text. Yes, anyone? बोलो भाई. नहीं है तो मैं इसको कर दूं, इसको क्लोज कर दूं. Today it's just only 2 sections. I'm dealing with zero and first order, and hope it is a bulkier topic, so you practice on that part. So I am just ending the session, and we'll send the content of this via the Google Classes, Google Classroom. Hope you just repeat the same and focus on the graphs, how they are created from the equations. The rest is up to you, that how you understand it and how you apply it, how you practice it. That's all for today. हाँ भाई, कुछ बोलो आगे से, तो करें एंड सेशन करें. Anyone by text? Okay, so I'm ending session, so you practice it. Okay.